किरण शर्मा मैडम की मुँह से अम्मा जी के बारे में कुछ शब्द, खास करके उनकी अनुभव सुनेंगे। किरण शर्मा जी इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, काफ़ी साल से हमारे साथ है, 2006 से हमारे साथ है। स्कूल की बचपना के साथ साथ स्कूल जिस तरह बड़े हुए वो भी साथ साथ जुड़ी है, काफ़ी अनुभव है। ये सब हम आज सुनेंगे। Om Amriteshware Namaha. My humble salutations at the lotus feet of our beloved Sadguru Pujya Amma. ओम नमः शिवाय। उपस्थित श्रोतागण और मेरे सभी सहपाठियों, last week, that is on Saturday, we celebrated Onam with pomp and fervor here in our school. Together, we created a beautiful folklore pilgrim, a Rangoli Malayalam, performed Onam dance and had a grand Onam feast. Just as these vibrant petals of different hues and colors create a stunning floral carpet, our school thrives on the love and harmony of diverse culture and emblem of national integration. Our beloved Amma embodies the spirit of unity, transcending caste, religion and creed, and encourages us to embrace these values in our lives. As a devout daughter, I feel I must honor her teachings. Therefore, my satsang is an integration of 5 languages. I hope you will enjoy it. I feel truly privileged to have the opportunity to speak from this elevated platform of Mata Amritanand Math on the auspicious occasion of our beloved Sadguru Pujya Amma's 71st birthday. Before I share my thoughts about her, I would like to take a moment to reflect on my journey within this remarkable organization. I embarked on my voyage with Amrita Vidyalayam in June 2006. Then, oblivious of Amma's divine appearance and her organizations. Just before that, in May, I was called for a written test and asked to write an essay on Amma, whom I had never heard of before. Despite my initial uncertainty, I persevered and was driven by guilt. Looking back, I believe it was Amma herself who guided me through that challenging moment, helping me find my way. In the library, where I was sitting to write my paper, my gaze was drawn to a portrait of Amma hanging on the wall. As I looked at her serene image, I couldn't help but to see my mom in her place. She, draped in a milky white sari, exuded an aura of purity and grace. The sandalwood and kumkum tilak on her forehead added a touch of sacredness to her divine form. Her radiant smile and open arms conveyed a deep loving embrace, as if she was inviting me to come closer to shower me with her tender kisses on my cheeks. I wrote the paper and went home. Next day, I received a call for an interview and was selected. Here, I would like to take a pride in saying that Amma chose me in the same way Krishna chose Arjuna. You may be wondering, why did I say so? I feel incredibly blessed by Amma's grace, because many people long for this moment when they can interact with Amma, to be captured in a photograph that becomes a treasure of their life and can hold it for a lifetime. However, with Amma's grace, it happened with me. Thanks to Ravi Raj Bhai for capturing this moment from nearly 100 meters away while I was interacting with Amma. I long for this moment since I was blessed with my younger son. It's truly special, especially when we all know that Amma never poses for pics. It was so spontaneous. And here I strongly believe that without her grace, it wouldn't have been possible. Hence, I consider myself fortunate to have had that opportunity as well. So, when I came here, I used to commune with her in order to seek solutions to unanswered questions.
and she replied to me in her own way. Let's see how she responded. Today's world is a world of stress, anxiety, and insecurities that people often turn to saints, religious leaders, astrologers, or sacred places, seeking immediate remedies to their maladies. But when their prayers aren't answered as quickly as they hope, they may lose faith and become skeptical, much like a child who is disillusioned by unmet expectations. Man proposes and God disposes. Means we make plans and proposals, but the ultimate outcome is beyond our control and in the hands of the supreme power. अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि दुनिया में इतनी प्रगति और ज्ञान के बावजूद भी हमें इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ती है कि कभी-कभी हम अंदर से टूट से जाते हैं और ईश्वर से सवाल करते हैं कि मेरी बारी कब आएगी? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिव्य शक्ति रहस्यमय तरीकों से काम करती है जो हमारे सामान्य और साधारण समझ से परे है। इसलिए यह प्रतीक्षा हमें एक विलंब या चुनौती सी लगती है, परंतु वह वास्तव में एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है। अथवा यह भी संभव है कि सृष्टिकर्ता या गुरु अपने अनंत और असीम ज्ञान से जानते हैं कि कब कृपा बरसानी है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो, जिसे हम कठिनाई या कमी या दुर्भाग्य के रूप में देखते हैं, वो वास्तव में हमारे धैर्य और गहरी समझ को विकसित करने का एक अवसर हो सकता है। धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात सब कुछ अपने नियत समय पर ही होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक सत्य और आशीर्वाद भी सही समय पर ही प्रकट होते हैं। लेकिन हम में से कई लोग उन लोगों की तरह ही हैं जो तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं। Nevertheless, the ambience here in this temple of Amrita Vidyalayam helped me develop a perspective of life, and I noticed certain changes there in me. Over time, I discovered that quite unexpectedly, I developed patience. I learned to wait. I cultivated perseverance. I learned to put in consistent efforts. I gained perspective. I learned to introspect and understand that much of human suffering is self-inflicted. Then one day it all came together. I discovered that I had grown emotionally resilient, embraced a deep sense of responsibility, confident in my stride, mentally at peace and contentment. Wow, how did this happen? Who brought this transformation in me? आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतना आश्चर्य और विस्मय क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके विपरीत मैं अक्सर यह देखती हूँ कि कई बुजुर्ग, शिक्षित और उच्च सभ्य व्यक्ति अपनी व्यापक शिक्षा और अनुभव के बावजूद कठोर, अपरिपक्व, अहंकारी और पाखंडी होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जब हुआ पंडित भयानक हुए, ढाई आखर पे प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। अर्थात सच्चा ज्ञान और समझदारी केवल औपचारिक शिक्षा या बौद्धिक ज्ञान से नहीं आता है, बल्कि प्रेम और अनुभव की गहराई से आता है। चलिए अब मेरे पहले सवाल पर आते हैं कि यह कैसे हुआ। सर्वात्मका शिव सुंदरा स्वीकार्या अभिवादना तिमिरा तुनि तेजाकडे प्रभुआ मुझाने जीवनम। सर्वात्मका शिव सुंदरा ही कवी कुसुमाग्रजांची सुंदर अशी कविता आहे। या कवितेत ते सूर्याची स्तुती आणि महती गात आहेत। सूर्य हा ब्रह्मांडात सर्वात तेजस्वी तारा आहे आणि त्याची विशेषता ही आहे की जिथेही तो जातो संपूर्ण अंधकार गायब होऊन जातो। हे गीत मी माझ्या लहानपणी म्हणजे चौथ्या वर्गात शिकले होते, जे आमच्या म्युझिक मॅडमनी शिकवले होते। त्या संगीत सोबत मराठी भाषा पण शिकवायच्या। मी त्यांच्या शिकवणीसाठी त्यांचे खूप आभारी आहे की आज मी हे गीत पूर्णतया समजते। तेव्हा तर काय, लहानपणी काय तिमीर आणि काय तेज हे माहीतच नव्हतं। एतत अस्माकं गुरुगीता अपि वदति सा एवं वदति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात अज्ञानस्य मोतियाबिंदूना अंधन
मम नेत्रान् ज्ञानकाजलेन उद्घाटितं श्रीगुरुं नमामि। अथ कः अयं सूर्यः, का वा इयं शक्तिः या अस्मान् अन्धकारात् प्रकाशं प्रदीपयति। अस्माकं कृते एतत् परिवर्तं कः आनयति इति पश्यामः। अर्थात जो व्यक्ति हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु होता है, वही आध्यात्मिक गुरु भी होता है। जब आप अपनी चिंता, भय और अहंकार को अपने गुरु को समर्पित करते हैं और उन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो वह आपकी सभी समस्याओं का ध्यान रखते हैं। अब आपको अपनी परेशानियों या चुनौतियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके बजाय आप इन चुनौतियों को इतनी सरलता से पार कर लेते हो जैसे कि एक कुशल धावक जो बाधा दौड़ में दौड़ता है और बिना किसी हर्डल को छुए आसानी से हर्डल रेस जीत भी लेता है। आपकी ऊर्जा जो पहले बिखरी हुई थी अब रचनात्मक और सृजनात्मक रूप से संचित हो जाती है, परंतु यह तभी होता है जब आप पर गुरु की कृपा हो। क्योंकि गुरु की कृपा गहन तरीके से काम करती है, इंटेंसिव तरीके से काम करती है, जो शिक्षा से परे है। भले ही आप उच्च शिक्षित हो, परंतु सच्ची समझ और सच्चा ज्ञान केवल गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। गुरु के दिव्य मार्गदर्शन के बिना कोई भी ज्ञानी अपने ज्ञान के बावजूद अज्ञानता में रह सकता है। In this context, I would like to quote Amma's words about the Guru. Without a Guru, nothing is possible. They bring you out of the darkness of ignorance into the light of knowledge. In principle, God and the Guru are the same. But we may say that Guru is higher than God. The Guru's grace is something unique. If the Guru wants, he can remove the effect of God's displeasure. But even God cannot remove the sin that comes from dishonoring the Guru. उपरोक्त वाक्य वास्तव में गुरु की दिव्य कृपा का अनुभव करने के लिए अपने अहंकार को पहचानने और उससे परे जाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हमारी संस्कृति में इस अवधारणा को मंदिर में नारियल चढ़ाने और तोड़ने के माध्यम द्वारा खूबसूरती से प्रतीकित किया गया है। नारियल तोड़ना व्यक्ति के अहंकार और आत्मभ्रम को तोड़ने का प्रतीक है, जिससे आध्यात्मिक जागृति और दिव्य आनंद की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। इसलिए कहते हैं ना, जब अहंकार मरता है तब आत्मा जागृत होती है। इस तस्वीर के सिलसिले में मैं आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक दृष्टांत साझा करना चाहती हूँ। मैं अपनी सहेली के साथ अम्मा की षष्ठी पूर्ति में अमृतपुरी में पीछे की पंक्ति में बैठी हुई थी और अम्मा की आरती की तैयारी को निहार रही थी। तभी एक स्वामी जी मंच से नीचे उतर कर आए और सीधे मेरे पास आकर कहने लगे, चलो आरती कर दें। मैं तो स्वामी जी को, जो मेरी बगल में बैठी हुई थी, देखने लगी, क्योंकि मेरा चुनाव आरती के लिए नहीं हुआ था। फिर स्वामी जी ने उन स्वामी जी को बताया कि आरती करने वाली मैडम सबसे सामने की कतार में बैठी हुई है, परंतु स्वामी जी को यह पता चल गया था कि अम्मा चाहती है कि मैं आरती करूं। और देखिए, अगले ही दिन स्वामी जी को आरती विभाग से सूचित किया गया कि आप अपनी शिक्षिका को आरती के लिए तैयार कीजिए। फिर तो सब कुछ जल्दी हो गया। मुझे स्वामी जी ने, आत्मृता चैतन्य जी ने, मेरी दो सहेलियां पूजा और माधवी मैम ने तैयार किया, सब कुछ उधार कर लिया, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ गुरु पे छोड़ दो, फिर तो समय ही आपकी जीत की पूरी तैयारी करता है। હવે છેલ્લે અહીં હું અમૃતા વિદ્યાલયમાં મારા શરૂઆતના વર્ષો દરમિયાન બનેલી એક ઘટનાનું વર્ણન કરવા માંગુ છું, જે બધાને જણાવવું જરૂરી છે। મારી જાણકારી મુજબ વર્ષ 2006 થી 2012 દરમિયાન અમ્મા તેમના બાળકોને મળવા માટે દર વર્ષે અમદાવાદની મુલાકાત લેતા હતા અને શિક્ષક તરીકે અમને તેમના શિક્ષણ, માનવતાવાદી કાર્યો અને જનકલ્યાણની જાગૃતતા ફેલાવવાની કામગીરી સોંપવામાં આવતી હતી। આવા જ એક મુલાકાતમાં મને લોકોના એક જૂથનો સામનો કરવો પડ્યો, જેને એક પડકારજનક પ્રશ્ન પૂછ્યો। પ્રશ્ન એવો હતો કે શું અમ્માએ કોઈ ચમત્કાર કર્યો છે? જો તમારી પાસે પુરાવા હોય અને તે રજૂ કરી શકો છો તો જ લોકો વિશ્વાસ કરે અને તેમને એક દિવ્ય અને અલૌકિક શક્તિ તરીકે માને। જે લોકોએ મને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો
તેમણે અમ્માની સરખામણી પોતાના ધર્મગુરુઓની સાથે કરી હતી, જે હાથની કલાથી સોનાના ઘરેણા, દાગીના અથવા વિભૂતિનું સર્જન કરતા હતા. આ સરખામણીએ મને નિશબ્દ બનાવી દીધી અને કેવી રીતે પ્રતિભાવ આપવો તે મૂંઝવણમાં મૂકી દીધી. હકીકતમાં અમ્માનું મહત્વ ચમત્કારોથી નહીં, પણ તેમની ભવ્ય લાગણીશીલ રીત, માનવતાના ઉદ્ધાર અને કલ્યાણ માટે કરેલા સત્કર્મોથી માપી શકાય છે. હવે મારે આ લોકોને જણાવવું છે કે અમ્મા એક સાધારણ કે સામાન્ય રીતે ચમત્કાર કરનારા વ્યક્તિ નથી, પરંતુ તે એક અસાધારણ રીતે આપણી અંદર પરિવર્તન સ્થાપિત થાય અને એક ઉમદા અને સાચા દ્રષ્ટિકોણથી આપનું જીવન પરિવર્તિત થાય તે સ્તરના વ્યક્તિ છે. તે અન્યને બદલતા નથી, તે આપણને બદલે છે, આપની સમજ અને પરિપ્રેક્ષ્ય વિકસાવે છે. આપણે જે કહેવાતા ચમત્કારો રોજના જીવનમાં જોઈએ છીએ એ ઘણીવાર માત્ર ભ્રમણા અથવા યુક્તિઓ છે, નહીં કે એક દિવ્ય અને અલૌકિક ચમત્કારિક અંતર આત્માનું પરિવર્તન. આ તો સામાન્ય લોકોની હાથની સફાઈ છે, સાચા દૈવી હસ્તક્ષેપ નથી. So, from this, we have learned a crucial lesson. Before proposing anything, we must build ourselves into strong and humble individual. This inner growth is what truly brings grace into our lives, because a true guru is not the one who instructs you, but the one who inspires you to discover the answer within yourself. So, surrender yourself to the feet of the Guru to make your life beautiful not only on this side of the ghat, but also at the other side of the ghat, that is immortal world. Before I conclude, I would like to offer my deepest gratitude and reverence to our beloved Sadguru Puj Amma. Her constant and often unseen guidance has been a profound source of transformation for each of us. I would like to express my heartfelt gratitude to the Amrita family for her trust in me and for providing this platform to share my experiences. I am deeply appreciative of the audience for your attentive and patient listening. Once again, I pray to Amma to cradle me in her gentle hands, just as we hold a diya steady amidst a storm. May she guide me through the voyage of life with her eternal light and grace. With this, I, Kiran Pandey Sharma, would like to take a big pause and pray. Om Namah Shivaya.